Good morning, team. Federal Bank will be selling its NBFC unit for $242 million. So almost it works out to 2,000 crores. So this is very positive for Federal Bank if that goes through. And in one more news, CCI has approved Cummins acquisition of Meritor. Meritor is a global supplier of axles, brakes, and other modules and components, and it is a OEM. So, that is positive for Cummins in a longer term. And CCA also has cleared Reliance the 344 million buy of Metro's local business. It is 2,850 crores. And Jio has offered a new monthly family postpaid plan. It is for 696 for 4 members of the family. So this is something where they are trying to get it from Bharti Airtel. It will be slightly negative for Bharti Airtel, but very positive for Jio. So they will have postpaid members more. The highest postpaid is with Bharti Airtel. So they would like to compete there. Jammu Kashmir Bank has signed a corporate agency agreement with LIC for life insurance product. NBCC has received a work order for construction of government medical college and hospital at Karaikal, Puducherry. This is 500 crore worth of project. There are many projects which NBCC is getting, but execution has been a problem. So we don't like this talk, but anyway, this news is positive. There is one positive news for Coal India. They have made a very optimistic statement yesterday to the exchanges. They are saying Coal India is optimistic of supplying 156 million ton of coal to power sector during April-June 2023, the coming April-June, in the next 3 months. And this would be 25.6% of the enhanced annual dispatch. And their target also, they have increased to 610 million tons, slated for FY24. And in their statement of the total coal demand for power is 821 million ton, and 3/4 of that would be supplied for Coal India. So they are making sure that Indian power producer have enough coal during the summer season, and they are making sure even we reduce our imports. So this is very positive for Coal India. It has been a very good dividend paying company. So at current valuation, Coal India is something we need to look at if you are interested in a high dividend yield stock. Mastek wins new business with Dulsco to deliver future-ready cloud-based person power solution. Hind Petro in pact with Chevron to manufacture lubricant under Caltex brand. This should be positive for Hind Petro. And with crude coming down, it is positive for OMCs. But Oil India and ONGC are correcting because crude is coming down. Even Reliance is correcting on that thing. Mahindra unit in Bangladesh has been wound up, but if we notice, Mahindra is closing down many of it unit where they are not profitable or they are not doing any business. So this reduces a lot of cost, and this increases more profitability and more focus. And in that end, even with Mahindra CIE is a span-based company, where they had some stake, they have exited, hardly they have less than 3% stake. So Mahindra is selling non-core business and getting into their core business, which is very positive for Mahindra. But due to the monsoons getting disturbed this time, the tractor segment of all companies are correcting. In that, even Mahindra is corrected. But let us wait and watch how it goes about. Cipla to sell stake in Uganda arm for $25 to $30 million. So the impact is not known. GAIL Limited, India's bankruptcy court approves GAIL's resolution plan of
2,101 crores for JBF Petrochemicals. And this is a very rare instance where a PSU company has acquired a company in NCLT. So let us see that. And I was watching a Blue Star management interview, and when he was asked, as summer is very hot, will AC sale improve? He gave a example that early summer doesn't mean we will have a long summer. Whenever there is an early summer, it cools down very early, so there can be some rain or the atmosphere changes. So he doesn't see early summer being a reason for buying air condition. So no, this is something we need to have, because many people have bought air conditioned stock like Voltas, fan stocks like Havels, Crompton Greaves, everything on the hope of the early hot summer. But he is saying that is not the case. Export of tire is expected to rise by 15% in FY23, says Atma chairman. So this should be very positive for Apollo Tires. Apollo Tires already has a few units in Europe, and Russia has been a major supplier of tire to Europe. Now, as Russia-Ukraine war has crossed 1 year, Apollo Tires is gaining market share, and they have ramped up capacity there. So that is very positive for Apollo Tires. We remain positive on this company. Bandhan Group is looking to enter into general insurance and life insurance, and the bank has met the insurance regulator. So this is something to watch out for. BL Kashyap wins order of 158 crores, and they said they have an order of 2,089 crores. This 158 crores is a civil construction. Dilip Bilgon has said they have got a completion certificate for Mysore Vidavada HAM project. It is 2,283 crores, but we are very negative on DBL. HCC in joint venture with Mega Engineering has won an order for 3,681 crores. This is for Bandra Kurla complex, Mumbai Ahmedabad high speed railway. It is a 2 lakh square meter radius station. So this is slightly positive, but we don't track the stock. Star Health, they have given information about so a few things which they noticed in their app. So they have given few information to the regulator saying that they are being snooped. This is something negative for Star. Railtel has received a work order from CDAC, Center for Development of Advanced Computing, for supply, installation, integration, testing and commissioning of IT infrastructure in Greenfield Data Center, New Delhi. It is a small order of 287 crores, but slightly positive for Airtel. DFM Food has received a delisting, voluntary delisting order from SEBI. So the company would be stopped trading from 28 March, that is Tuesday. So that will be a Tuesday, and 27th March will be the last day of trading. So whoever wants to surrender the share, they can surrender it at 467. That will be an exit price, and that window will be available for the next 1 year. That is what DFM Food has informed the exchange. Capri Global has informed the exchange of the AUM of 1,000 crores in only gold loan. And they have also said their branches have reached 500 plus from 108 branches previously. And the company is also looking to raise funds through rights issue. And in the last news, Canfin Home will consider raising 1,764 crore through NCD in one or more tranches. So everybody is raising fund. Yesterday we said PNB has got an approval for a rights issue, post which the stock has corrected, PNB Housing Finance. With that, over to you, Kshitija.
गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। फर्स्ट अपडेट है एस्ट्रो मोटर के ऊपर। जो हार्ले डेविडसन है उन्होंने अनाउंस किया कि वो मोस्ट अफोर्डेबल बाइक है HTX 350, वो अराउंड 4 लाख के अराउंड, और HTX 350 जो डायरेक्टली कंपीट करेगा रॉयल एनफील्ड के साथ ग्लोबल मिड साइज मोटरसाइकिल मार्केट में। और हार्ले डेविडसन है वो लॉन्च करेंगे ये बाइक चाइनीज मार्केट में फर्स्ट, और आफ्टर मतलब कंपनी का प्लान है कि ये लॉन्च इमर्जिंग मार्केट में जैसे कि इंडिया है, थाईलैंड है, ब्राजील और मेनी मोर कंट्रीज में करेंगे। और मतलब इंडिया में बाइक है वो लॉन्च होगी अंडर हीरो मोटोको एंड हार्ले डेविडसन के पार्टनरशिप में। तो हीरो मोटोको है वो ड्राइव करेगा लोकलाइजेशन, जो बेसिकली प्राइसिंग जो बाइक की और डाउन हो सकती है अराउंड 2.4 लाख, बट जो प्राइस है वो स्टिल भी है 15% प्रीमियम में है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350cc के कंपेयर करें तो ये पॉजिटिव है आइशा मोटर के लिए। नेक्स्ट अपडेट है महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर। महिंद्रा एंड महिंद्रा है उन्होंने बोला है कि महिंद्रा का जो बांग्लादेश का प्राइवेट लिमिटेड है MBPL वो लिक्विडेट और सीज करेंगे एग्जिस्टेंस, और ये इफेक्ट हुआ है March 14 से। और जो ये क्लोजिंग हो रहा है क्योंकि उनका जो नील इनकम है ऑपरेशन से वो नील है फाइनेंशियल ईयर 22 में, और उसकी जो नेटवर्थ है वो 3 करोड़ है। तो अराउंड जो 0.01% उनका जो कंसिडरेशन नेटवर्थ है कंपनी का वहां से है, तो मेजर इम्पैक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि महिंद्रा जो है वो अभी जो ये क्लोज करने के बाद उनका यूनिट बांग्लादेश का उनका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा और उसका मोर फोकस रहेगा कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। और कंपनी अभी उनके जो नॉन कोर बिजनेसेस है जैसे कि उन्होंने अभी जो स्टेक था महिंद्रा CI का वो भी सेल किया, अराउंड कुछ हार्डली 3% बचा है स्टेक, वो भी जल्दी सेल करेंगे। तो उनका मोर फोकस अभी कोर बिजनेस पे रहेगा। बट एक अपडेट है कि जो अभी मानसून के मतलब मानसून का कोई निश्चितता नहीं है, उसके कारण जो ट्रैक्टर सेगमेंट है उसमें सभी जो कंपनीज है ट्रैक्टर रिलेटेड वो करेक्ट हो रही है, तो इसमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट अपडेट है PNC इंफ्रा के ऊपर। कंपनी को ऑर्डर मिला है 1260 करोड़ का, जो मतलब अभी इलेक्शन ईयर आ रहा है और ये एक्सपेक्ट है कि और ऑर्डर कंपनीज को मिलेंगी, तो कंपनी के लिए पॉजिटिव अपडेट है। PVR और आइनॉक्स का जो कल एनालिस्ट कॉल हुआ उसमें से कुछ टेकअवेज है। ये जो मर्ज एंटिटी है उसके जो अभी स्क्रीन है वो उसकी काउंट है 1674, और ओवरऑल उनका मार्केट शेयर है 43 मल्टीप्लेक्स में, और 30% शेयर है बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन से आता है। तो मैनेजमेंट ने क्या हाईलाइट किया है कि PVR जो आइनॉक्स है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि उनका जो सिनर्जी से बेसिकली फॉर्म है वो इंक्रीज होगा इन F&B सेगमेंट में, एडवर्टाइजमेंट के रेवेन्यू में, और उसके अलावा जो उनका इंटीग्रेशन सप्लाई चेन है वो इकोनॉमिक स्केल है वो लीड करेगा उनका जो रिडक्शन है कॉस्ट में वो रिड्यूस करने में। और इसके अलावा कंपनी अभी ड्राइव कर रही है कैपेक्स सिनर्जी, उसका जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट स्क्रीन है वो रिड्यूस होगा 10 to 15% से। मैनेजमेंट ने ये गाइड किया है कि उनका जो एनुअल इबिटा है सिनर्जीज वो 2.25 बिलियन है नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स के लिए। और कंबाइन एंटिटी है उनका एम है कि वो ऐड करेंगे 180 से लेकर 200 स्क्रीन एवरी ईयर में नेक्स्ट 2 इयर्स के टाइम फ्रेम में, और उनका स्पेशल फोकस रहेगा उनका जो अंडर पेनिट्रेटेड साउथ इंडियन मार्केट है उसको एक्सपांड करने में टायर 2 और टायर 3 सिटीज में। और कंपनी का बिलीफ है कि उनका जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रेंथन होगी और डोमिनेट करेगा मार्केट शेयर कंबाइन एंटिटी बनकर, और ये अच्छा होगा रोबस्ट ग्रोथ करने के लिए आगे जाके। करंटली स्टॉक के ऊपर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से बाय रेटिंग है दोनों स्टॉक के ऊपर। देन नेक्स्ट अपडेट है अलगी इक्विपमेंट्स के ऊपर। कंपनी ने अनाउंस किया जो होली ओन सब्सिडियरी अलगी कंप्रेसर USA जो उन्होंने अक्वायर किया 33.33% शेयर कैपिटल CS इंडस्ट्रियल सर्विसेज का 13 मार्च को। और CS इंडस्ट्रियल सर्विसेज वो अभी एक्सक्लूसिवली डीलर डिस्ट्रीब्यूशन करती है अलगी कंप्रेसर USA का, और जो सेल है अलगी ब्रांडेड कंप्रेसर का वेस्टर्न न्यूयॉर्क रीजन के लिए, तो ये पॉजिटिव अपडेट है। फेडरल बैंक है वो उनका जो NBCC यूनिट है वो सेल कर रही है, तो ये पॉजिटिव होगा फेडरल बैंक के लिए। इसके अलावा CCI ने अप्रूव किया है क्यूमिंस का जो एक्विजिशन है मेटाफॉर में, तो ये लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से पॉजिटिव है क्यूमिंस के लिए। इसके अलावा CCI ने डिक्लेयर किया है जो 34 बिलियन जो मेट्रो लोकल बिजनेस है जियो का
उसके अराउंड उसके लिए। और जो जियो का भी मंथली जो फैमिली पैक है वो इंक्रीज हुआ, मतलब जैसे कि भारती एयरटेल में फैमिली मेंबरशिप था, वैसे ही जियो ने अभी स्टार्ट किया है, कुछ 696 अराउंड है 4 मेंबर्स के लिए। तो ये स्लाइटली नेगेटिव हुआ भारती एयरटेल के लिए, वो पॉजिटिव है जियो के लिए, क्योंकि बट हाईएस्ट पोस्टपेड है अभी भारती एयरटेल ही। नेक्स्ट अपडेट है जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, उन्होंने एलआईसी के साथ साइन अग्रीमेंट किया है कि जो एलआईसी इंश्योरेंस जो है वो सेल करने के लिए। देन नेक्स्ट अपडेट है कोल इंडिया के ऊपर 156 मिलियन टन जो पावर सेक्टर को कंपनी कोल सप्लाई करेंगी ड्यूरिंग अप्रैल से लेके जून 2023 के क्वार्टर में, और उसका अराउंड 25% एनुअल डिस्पैच हो रहा है। तो नेक्स्ट अपडेट है कोल इंडिया के ऊपर 156 जो मिलियन उनका टोटल रहता है वो पावर सेक्टर के लिए, वो ड्यूरिंग अप्रैल टू जून क्वार्टर के लिए सप्लाई करेंगे। उसमें से जो 25% उनका एनुअल डिस्पैच है टोटल 821 मिलियन सेक्टर के लिए लगता है, तो उसमें से 3/4 है वो सप्लाई करेंगे कोल इंडिया। तो एक पॉजिटिव है कोल इंडिया के लिए। और कंपनी जो है वो हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो हाई डिविडेंड जो इन्वेस्टर्स है वो ये स्टॉक को वॉच आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है एचपीसीएल जो कंपनी है, उन्होंने एक इम्पैक्ट साइन किया है शेरॉन ब्रांड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ, जो मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूट एंड मार्केट लुब्रिकेंट सुपरमार्केट में मेजरली सप्लाई करती है। और उनका जो मैनेजमेंट है उन्होंने बोला है कि ये जो कोलैबोरेशन है वो कंप्राइज करेंगे लाइसेंसिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग शेरॉन लुब्रिकेंट्स प्रोडक्ट्स का। देन नेक्स्ट अपडेट है सिप्ला के ऊपर। सिप्ला का जो मेजर ड्रग उन्होंने इम्पैक्ट साइन किया अफ्रीका कैपिटल वर्क के साथ, जो सेल करेंगे 51.1% स्टेक इन युगांडा बेस्ड जो सिप्ला क्वालिटी केमिकल इंडस्ट्री है उसके साथ। ये सेल के बाद जो सिप्ला क्वालिटी केमिकल इंडस्ट्री है उनका जो सी सब्सिडरी है पेरेंट कंपनी सिप्ला, सो बेसिकली प्रपोज किया है, सेल एक्सपेक्टेड है कि ये कंप्लीट होगा एंड ऑफ द मई में। देन नेक्स्ट अपडेट है ब्लू स्टार का मैनेजमेंट का इंटरव्यू हम लोगों ने सुना था, उसमें जो है कि अभी समर जल्दी स्टार्ट हुआ था और हॉट है, बट अर्ली समर का उनका जो मैनेजमेंट का कमेंट्री है उसमें कहा गया है कि जो अर्ली समर है वो कभी कभी जल्दी कूल डाउन होता है, एटमॉस्फेयर चेंजेस होते हैं। तो जिन लोगों ने वोल्टास हैवेल्स क्रॉम्पटन जैसे स्टॉक्स लिए हैं कि उसके लिए ये केस नहीं होगी, क्योंकि कंपनी के हिसाब से जैसे ही जल्दी समर आया है वैसे जल्दी कूल ऑफ भी हो सकता है। देन नेक्स्ट अपडेट है स्टार हेल्थ के ऊपर। स्टार हेल्थ के ऊपर कंपनी को कुछ स्मूथ किया है तो स्लाइटली नेगेटिव रह सकता है। देन रेलटेल कॉर्पोरेशन कंपनी को 287.5 करोड़ का ऑर्डर मिला है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट और एडवांस कंप्यूटिंग का, जो सप्लाई करेंगे इंस्टॉलेशन करेंगे, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, कमीशन ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर नई दिल्ली और बैंगलोर में। देन डीएम फूड जो कंपनी है उन्होंने वॉलंटरी एग्जिट के लिए अप्लाई किया था, तो 28 मार्च एग्जिट है, सो लास्ट ट्रेडिंग डे होगा 27 मार्च, अराउंड कुछ 467 एग्जिट प्राइस होगी। देन कैंफिन होम है वो उन्होंने भी फंड रेजिंग के लिए एनसीडी से एनसीडी के फॉर्म में मोड रैंके में अप्लाई किया है। कल भी पीएनबी ने भी अप्रूवल, सेबी ने अप्रूवल किया था, पीएनबी ऑल्सो भी फंड रेज करी, तो बहुत सारी कंपनियां फंड रेज कर रही है। देन एचसीसी जो कंपनी है उन्होंने जॉइंट वेंचर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है से ऑर्डर एक प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन है बुलेट ट्रेन स्टेशन का, और उसकी जो वर्थ है वो 3681 करोड़ है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली अवार्ड हुआ है नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, जो कंस्ट्रक्शन करेंगे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल का। Technical and derivative update. If you see in yesterday's trading session, the index tried to beat 17,000 level for a brief period of time, and we have reached to the 50% retracement mark of 15,183 to 19,000 level. So 17,000 will act as a crucial support for coming this week in a trading session. If you are closing below 17,000 levels, then another leg of 300-400 points open for up to 16,600, 16,800. This should be the ideal support for the
market and the bulls. If we are reaching 16,600, then we could see further sell-off and sell-off for intensified. Second, the hard thing is that the FIs have shorted the positions heavily. They are short by 1,44,000 Kotak, and this would be the third highest shortest in the past year since COVID. In COVID, it was 1,73,000, and second, it was in the 2022, it was 1,46,000, and third is this time 1,44,000. So this is the third highest short ever created by FIs since COVID, and the long short ratio is standing at 1326. So there is no respect from the FIs front also. So on the sectoral front, if you see, there was majorly all the sectors were trading in the red, barring Nifty, Pharma, and Media, and it was closed by flat 1% mark. And coming to the Bank Nifty also witnessed yesterday break the 200 SMS zones and posted a close near about 13,400 zones. So again, 200 zones would be a hurdle for the Bank Nifty index, and there is a doji fantastic pattern formed on this index. So doji indicates there could be some bounces in the index, and we are seeing that this could be a dead cat bounce or any relief rally. So if you see from past 2-3 trading sessions, there has been continuous sell-off in the market. So if we find any bounce in the market, we should use this as an opportunity exit long. Fresh positions could only be created in Bank Nifty unless we don't cross above 41,500. Similarly, in Nifty, if we see then 17,800 would be an ideal trigger for the market where we can see there is any meaningful strength or the rally for the Nifty to create fresh long. Else we should use every opportunity to exit longs and create fresh shorts in the market. Secondly, on the option future funds, if you see, then there was a short build-up in the index to the tune of 5%, and the PCR also swung from 0.71 to 0.69. So now PCR is coming to the oversold zones also. So now if we see in the option fund for the Nifty, call additions were seen 17,500 and 17,400. While put options, if we see 17,000 and 16,800 would be an ideal zone for the support seeing on the option fund for the put. And similarly for the Bank Nifty, short build-up was built to the around 4%. PCR has shown an uptick from 0.51 to 0.59. And we can see additions in the call option from 39,500 on the call front and 39,500 on the put front. So that is a straddle made on this front. So this should act as a make and base level. Coming to the FIS cash rate, the FIS has again sold in the cash market to the tune of 3,000 crore, 3,086 crore, and DIS bought to the tune of 21 crores. And now India VIX is also standing at 16 odd level. So this is also an alarming and concerning for the index. So India VIX needs to cool off, or it should ideally trade in a lower range. There should be no spikes in that. So that's it for mine. I'll hand over to Bhavesh sir for more updates. Hi, good morning, team. So few updates from my side, starting with LG Equipment. So LG Equipment has received an order. LG Equipment announced that the company's wholly owned subsidiary, LG Compressor USA, has acquired 33% stake of share capital of CS Industrial Services. So this bodes well for the company. So this company will be exclusive dealer distributor for LG compressors for sale of LG branded compressors in Western New York region. Secondly, we attended PVR Inox analyst call yesterday. So the takeaways were that the merged entity currently has screens of around 1674 screens, and it commands a market share of 43% in multiplex. Management highlighted that PVR Inox is expected to benefit from synergies in the form of increase in F&B and advertising revenue. And lastly, the combined entity will add 180 to 200 screens every year for the next 2 years, with a special focus on underpenetrated South Indian market. Secondly, on PNC Infra, so PNC Infra received order worth rupees 1260 crores. Given that now election is near, we can expect further such orders. So this is positive for the company. Then on Eicher Motors, so Harley Davidson has announced that its affordable bike HD has HD X350 now priced at 4 lakhs. The HD X350 will directly compete with Royal Enfield in the global and mid-size motorcycle segment. So there is competition for Eicher Motors. Then on Mahindra, there is a small news that Mahindra Bangladesh Private Limited was a subsidiary, and now it has ceased to exist because this
business was actually doing nothing, and so there was no operation, and the company has decided to wind it up.